Est-ce que quelqu'un est content d'être là? कि Moi, कोही खुसी हुनुहुन्छ परमेश्वरको घरमा je suis toujours content dans la maison. म जहिले पनि खुसी हुन्छु हामी ताली बजाउन परमेश्वरको लागि Se lever tous ensemble, nous allons lire la parole du Seigneur. हामी एउटा वचन पढ्नका लागि सबैजना उठ्ने छौँ Et ensuite, nous allons prier. त्यो पछाडि हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ Alléluia. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de toujours, avant de commencer un service, de toujours lire l'Évangile. परमेश्वरले मेरो हृदयमा जहिले पनि लगाउनुहुन्छ सेवा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा वचन पढ्न Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, हामी पहिलो कोरिन्थी 15 मा जानेछौँ verset 1 à 5. पहिलो कोरिन्थी 15 को 1 देखि 5 सम्म Que quelqu'un dise l'Évangile. कसैले भन्नु सुसमाचार Susamata. C'est l'Évangile qui nous fait vivre. Amen. हामीलाई जिउने बनाउँछ Donc 1 Corinthiens 15, पहिलो कोरिन्थी 15 verset 1. को 1 देखि Nous allons le lire tous ensemble. हामी पहिलो पददेखि पढ्नेछौँ Que quelqu'un dit, je vous rappelle. कसैले भन्नुहोस् भाइ हो Je vous rappelle, frères. Lisons tous ensemble en français, ensuite on va lire en népalais. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 5 frères à la fois, dont quelques-uns sont morts. Amen. आमेन Dont la plupart sont encore vivants. En népalais, frère Déo, यहाँ लेखिएको छ भाइ हो मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ त्यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रह्यौ भने नत्र त तिमीहरूले व्यर्थमै विश्वास गर्यौ किनभने मैले जे पाएँ त्यसलाई सबभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिए अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रिस्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो उहाँ गाडिनुभयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो उहाँ कफास कहाँ अनि 12औं जना कहाँ देखा पर्नुभयो आमेन l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. सुसमाचार भनेको हाम्रो प्रभु येशू मर्नु भएको गाडिनु भएको र बौरी उठ्नु भएको हो Nous devons nous rappeler de cet évangile. यो सुसमाचारको याद जहिले गर्नुपर्छ Nous devons persévérer dans cet र évangile. यो सुसमाचारमा स्थिर रहनुपर्छ Car c'est cet évangile qui nous sauve. किनभने यो सुसमाचारले हामीलाई बचाउँछ Amen. आमेन Le jour de la Pentecôte, c'était le jour de la naissance de notre Église. पेन्टेकोस्टको दिनमा मण्डलीको जन्म भएको थियो Et Pierre a dit ceci, यो 25 तेज भने répentez-vous पश्चाताप गर et que chacun de vous तिमीहरू soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रत्येकले बप्तिस्मा लिएको pour le pardon de nos péchés. तिमीहरूको पाप क्षमाको लागि Amen. आमेन Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. पछाडि तिमीले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ Cette promesse est pour tout le monde. प्रतिज्ञा सबैको लागि हो Pour tout le monde. सबैको लागि Amen. आमेन L'évangile doit être gardé dans nos cœurs tous les jours. सुसमाचार हाम्रो हृदयमा राख्नु पर्दछ Laissez-moi vous dire que la repentance est quotidienne. मलाई भन्न दिनुहोस् कि पश्चाताप दैनिक गर्ने कुरा हो On ne se répand pas seulement une fois, हामी एकचोटि मात्र होइन on se répand tous les jours. तर जहिले पनि Amen. Nous devons garder l'évangile. सुसमाचार Avant de dormir, Seigneur, सुत्नुभन्दा अगाडि ton évangile तपाईँको सुसमाचार dans mon cœur. मेरो हृदयमा Parce que c'est en cet évangile que je किनभने vis. यो
सुसमाचारमा Nous मैले devons nous repentir chaque jour जहिले पनि पश्चाताप des गर्नुपर्छ fautes que nous connaissons जुन गल्तीहरू हामी et de गर्छौँ celles que nous ne connaissons pas. जुन गल्तीहरू हामी Car नजानिकन aucun गर्छौँ homme n'est juste sur la अनि terre. संसारमा कोही पनि धर्मी छैन Nous péchons en tout temps. हामी जहिले पनि पाप गर्छौँ Amen. आमेन। Nous devons demander au Seigneur de nous baptiser tous les jours, हामी जहिले पनि परमेश्वर भन्नुपर्छ बत्तिसमा de nous लगाउनु laver de nos péchés. धुनुहोस् हाम्रो पापमा Parce qu'il dit, je vous laverai d'eau pure किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ म तँलाई शुद्ध et पानी j'enlèverai vos दिनेछु iniquités. र तिमीहरूको अपराधलाई हटाउनेछु Dieu n'enlève pas nos péchés en une seule journée. परमेश्वरले हाम्रो पाप एकै दिनमा हटाउनुहुन्न C'est petit à petit. अलिअलि गरेर हो Amen. आमेन। Sinon, nous allons avoir peur. यदि होइन भने हामी डराउँछौँ Si Dieu nous révélait tout ce que nous sommes, यदि परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ जस्तो हामी छौँ nous n'allons pas survivre. हामी बाँच्ने छैनौँ Amen. आमेन। Nous allons rétrograder हामी पछाडि हट्नेछौँ chaque jour. तर दिन प्रतिदिन Et il a dit, vous soyez remplis du Saint-Esprit. उहाँ भन्नुहुन्छ तिमीहरू पवित्र आत्माले Nous भरिनेछौ devons être remplis du Saint-Esprit पवित्र chaque jour. आत्माले भरिनुपर्छ दिन प्रतिदिन Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. पवित्र आत्माले हो हामीलाई सिकाउने C'est le Saint-Esprit qui est la force de Dieu, पवित्र la puissance आत्माले de हो Dieu, हामीलाई बल दिने qui nous permet de vivre pour lui. जसले हामीलाई अनन्तको लागि जीवन Nous devons être remplis du Saint-Esprit पवित्र आत्माले पूर्ण हुनुपर्छ tout le temps. दिन प्रतिदिन Amen. आमेन। C'est l'Esprit de Dieu qui dirige. परमेश्वरको आत्माले हो हामीलाई डोर्याउने Si nous vivons selon la chair, यदि हामी शरीरको अनुसार जिउँछौँ nous ne serons pas capables. हामी सक्दैनौँ C'est pour cela que Paul dit, je vous rappelle, यसै frère, कारण पावलले भन्छन् म तिमीलाई भन्छु भाइ हो l'évangile सुसमाचार que je vous ai annoncé, जुन मैले तिमीलाई भनेको थिएँ que vous avez déjà reçu, जुन तिमीले पहिले पाएको et थियौ dans lequel vous avez अनि persévéré. जुनमा तिमीहरू स्थिर Nous रह्यौ devons persévérer. स्थिर रहनुपर्छ Hystérons-nous pas ça. il faut persévérer Hystérons-nous pas ça. il faut persévérer Que quelqu'un dise, hystérons-nous pas ça. कसैले भन्नुहोस् स्थिर रहनुपर्छ Amen. persévérer Persévérer. persévérer Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. धन्यवाद Donc nous परमेश्वर allons lire l'évangile chaque jour. दिन प्रतिदिन यो सुसमाचारलाई पढ्नुपर्छ Amen. Jusque que ce soit une seconde nature. यो चाहिँ अर्को रूप हो बनियोस् हाम्रो Nous allons aller dans le livre de Jean, हामी यहुन्नाको पुस्तकमा जानेछौँ chapitre 4, यहुन्ना 4 à partir du verset 22 यहुन्ना 4 को 22 देखि jusqu'au verset 24. 22 देखि 24 सम्म पढ्नेछौँ Alléluia. Frère Déo. यहाँ लेखिएको छ तिमीहरू जे आराधना गर्दछौ सो जान्नेछौ हामी जे आराधना गर्छौँ सो जान्दछौँ किनभने मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट आउँछ तर बेला आइरहेको छ र त्यो बेला अहिले हो जब साँचो आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छन् किनभने आराधना गर्ने त्यसै आराधनाहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ आमेन। Donc, la parole de Dieu nous dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Que quelqu'un dise l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc nous allons partager sur ce passage. Notre Père cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Si nous pouvons tous prier. Seigneur, nous te remercions, Papa, de ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous ne la prenons pas pour acquise. Maintenant, Père, nous te remercions de nous avoir conduits en ce lieu, Seigneur Jésus. Nous prions maintenant que ta main soit étendue sur chacun de nous, Papa. Que tes anges campent autour de ce lieu, Papa. Que tout esprit de distraction soit brisé, rejeté dans les ténèbres, Seigneur. Car tu nous as attirés, Papa, dans ton saint temple, afin que nous puissions, Papa, vivre. Que ta parole soit inscrite sur les tables de nos cœurs, Seigneur. Utilise mes lèvres d'argile, que j'apporte ta parole sans crainte ni faveur, mais avec amour, Seigneur. Ne retiens rien, Papa, mais donne tout, Papa, selon ton oracle aujourd'hui, Seigneur. Où est encore, frère Déo, Papa?